यूनिट 3 जो कि हमारे पास है फोर्स एंड मोशन, जिसका तीसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर हमने डिस्टेंस पे दिया, दूसरा लेक्चर हमने डिस्प्लेसमेंट पे दिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं तीसरा ही लेक्चर है डिस्प्लेसमेंट पे। बच्चा आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों के एमडीकेट का जो पहला टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट। लेट्स स्टार्ट, थोड़ा सा मजीद डिस्प्लेसमेंट को आगे जो है एक्सप्लेन करते हैं। डिस्प्लेसमेंट हमने सेकेंड लेक्चर में उसको डिफाइन भी किया था, उससे रिलेटेड एमसीक्यू वगैरह भी हमने डिस्कस किए थे। अब डिस्प्लेसमेंट in terms of position vector, अगर हम डिस्प्लेसमेंट को इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर लें, हाउ, लेट्स सपोज ऑलरेडी हम जानते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज से पॉइंट बी। ये दो पॉइंट्स हैं, वन इज पॉइंट ए एंड द सेकंड इज पॉइंट बी। पॉइंट ए इज द इनिशियल पॉइंट एंड पॉइंट बी इज द फाइनल पॉइंट। फ्रॉम पॉइंट ए टू बी दिस इज एक्चुअली डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अगर देखा जाए, ये बचे हमारे पास द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज डेल्टा डी। अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर एक्सप्लेन कर लें। नाउ अगर देखा जाए यहाँ पर हमारे पास ये फर्स्ट पोजीशन वेक्टर हुआ। पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से ड्रा किया जाता है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन से ड्रा किया जाता है। This is position vector first, this is R1 and this is the position vector second, this is R2. अगर देखा जाए what is position vector R1 and the second is position vector R2, by head to tail rule, by head to tail rule जो वेक्टर एडिशन हमारे पास होता है, अगर देखा जाए लेट्स सपोज दिस इज वेक्टर 1 या वेक्टर फर्स्ट, R1 इज द फर्स्ट पोजीशन वेक्टर, दिस इज द सेकंड पोजीशन वेक्टर। वेक्टर एडिशन ऑलरेडी हम जानते हैं कि फर्स्ट वेक्टर के हेड के ऊपर सेकंड वेक्टर का टेल आ जाएगा। दिस इज सेकंड वेक्टर व्हिच इज डेल्टा डी, दिस इज द सेकंड वेक्टर एंड दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। R2 इज द रिजल्टेंट वेक्टर। अगर हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को फाइंड करना चाहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर सेकंड या फाइनल माइनस पोजीशन वेक्टर फर्स्ट। एमसीक्यू के लिहाज से बच्चे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू displacement vector. This is the mathematical formula of the position vector. So R2 minus R2 vector minus R1 vector. R2 is the final position vector and R1 is the initial position vector. And delta T is the displacement vector. So displacement in terms of position vector is final position vector minus initial position vector. Students, इस पर किस किस्म के MCQ आ सकते हैं? तो पहले तो MCQ आ सकता है इससे related। MCQ ये आता है कि which one of the following is the mathematical formula of a displacement vector, displacement वेक्टर। मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको दिए जा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर ऑप्शंस दे रहा हूँ। ऑप्शन ए, दिस इज फर्स्ट पोजीशन वेक्टर माइनस सेकंड पोजीशन वेक्टर। ऑप्शन बी, सेकंड पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट पोजीशन वेक्टर। ऑप्शन सी, R1 R2। ऑप्शन डी, R2 R1। So which option is the correct option? Your answer should be the position vector. So that displacement vector in terms of position vector is defined as the final position vector minus initial position vector. So your answer should be option B is the correct option.
ऑप्शन बी जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। इससे रिलेटेड अगर हम यहाँ पर जो है एमसीक्यू वगैरह जो है डिस्कस कर लें, से फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज एमसीक्यू आता है, अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, से फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि हमारे पास अ पार्टिकल moves from 2 3 to 5 6। लेट्स सपोज ये हमारे पास दो पोजीशन वेक्टर्स दिए हैं, आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर coordinates। What is the displacement vector coordinates? तो इसका मतलब है हमें अगर देखा जाए दिया हुआ है फर्स्ट पोजीशन वेक्टर एंड सेकंड पोजीशन वेक्टर और हमसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स मांगे हैं, तो याद रखें इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा xy that will be equal to x2 minus x1 comma y2 minus y1. This is the formula. Now remember xy is equal to x2, this is x1 and this is y1। ये हमारे पास है x2 और ये हमारे पास है y2। So x2 minus x1, so 5 minus 6 comma ये हो जाएगा y2 minus y1, this is 6 minus 3, so xy is equal to 5 minus 6, this is x2 minus x1, so this is 2, x1 is 2, 5 minus 2 3 and 6 minus 3 3, this is the displacement vector coordinates। ये हमारे पास displacement vector के coordinates आ गए। now for example MCQ आ जाए कि a particle moves from position vector first, which is 2i plus 3j, to final position vector R2, which is equal to 4i plus 7j, then find the displacement vector। What will be the displacement vector? So displacement vector, already we have formula, we know the displacement vector is final position vector R2 minus initial position vector R1। This is the mathematical formula, so final position vector minus initial position vector। So delta D is equal to final position vector, which is 4i plus 7j minus initial position vector 2i plus 3j। So the displacement vector I से I को subtract करें, j से j को subtract करें, so 4i minus 2i, the answer is 2i। 7 minus 3, so ये हो जाएगा 7 minus 3 4j। This is the displacement vector। And what will be the magnitude of the displacement vector? So the magnitude of the displacement vector formula is, so the displacement vector magnitude is x square plus y square। So the displacement vector magnitude is x is 2 square plus 4 square, 2 square 4 square 16, so the displacement vector magnitude is 4 plus 16, the answer is under root 20, which is also written as under root 20, 4 5s are 20, the 4 multiply
5, which is also written as under root 4, under root 5, under root 4 is 2. So the displacement vector magnitude is 2 under root 5. This is the displacement vector magnitude. Now, some relationship between distance and displacement. Relationship between distance and displacement. Relation या comparison. Relation या comparison between distance and displacement. What is the relationship between distance and displacement? Now, under condition of a straight line, first, under condition of a straight line, under the condition of straight line, condition of a straight line, if a body moves in a straight line, then the distance will always be equal to displacement. When a body moves in a straight line, then the displacement will always be equal to distance. अक्सर MCQ आता है, under what condition the displacement is equal to distance, या the displacement magnitude is equal to distance, because displacement is a vector quantity and distance is a scalar quantity. Your answer should be in a straight line. If a body moves in a straight line, then the displacement will always be equal to distance. For example, this is point A and this is point B. From A to B, the displacement traveled by body is 10 meter east. What will be the distance? So your answer should be, so the magnitude of the displacement is called distance, which is 10 meter. So it means if a body moves in a straight line, then the magnitude of the displacement is called distance. The magnitude of the displacement is called distance. Cup, if a body moves in a straight line. If a body moves in a straight line, then the displacement magnitude is equal to distance. How much displacement? 10 meter east. What will be the distance? Distance is denoted by S, which is a scalar quantity. No need to specify the direction. So the distance is how much. Your answer should be 10 meter. So it means when a body moves in a straight line, then the displacement will always be equal to distance. Remember, in straight line, the displacement magnitude is also is equal to distance. It means the ratio of the displacement magnitude to distance will be equal to 1, or the ratio of the distance to displacement magnitude is equal to 1. It means the body must move in a straight line. In these three conditions, body must moves in a straight line. For example, let's suppose MCQ हमें दिया जाए
a body moves 100 kilometer south, then the distance travel is, your answer should be, the distance travel will be equal to 100 kilometer. The body must move in a straight line. If a body move in a straight line, then the displacement magnitude will be equal to distance. The ratio of the displacement to distance will be equal to 1. The ratio of distance to displacement will be equal to 1. अगर हमें कहा जाए कि the ratio of the distance to displacement is equal to 1, the body motion is said to be dash type of motion. The body motion must be a straight line motion. The body motion must be a straight line motion. Body जो है वो straight line में move करेगी. So distance displacement के बराबर हो सकता है एक ही सूरत में, अगर कोई भी बॉडी है और वो स्ट्रेट लाइन मूव करती है तो उस बॉडी का जो डिस्टेंस होगा वो मस्ट डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा. मैग्नीट्यूड इसलिए कहते हैं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है. तो वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी के बराबर नहीं हो सकता. अगर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो फिर बराबर हो सकता है. स्टूडेंट्स, under the condition of closed path, under the condition of a closed path वो पाथ होता है जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है, उसको हम क्लोज पाथ कहते हैं. वो क्लोज पाथ कोई भी क्लोज पाथ हो सकता है. वो क्लोज पाथ सर्कल भी हो सकता है जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो. वो हमारे पास एक स्क्वायर भी हो सकता है. वो हमारे पास एक रेक्टेंगल भी हो सकता है. वो हमारे पास एक ट्राइंगल भी हो सकता है. वो कोई इर्रेगुलर शेप भी हो सकता है. रिमेंबर, under the condition of closed path, remember the displacement will be equal to null vector. याद रखें, क्लोज पाथ के केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो नल वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड 0 होगा. डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट इज अ नल वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट जो होगा नल वेक्टर. नल वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 0 और आर्बिट्ररी डायरेक्शन. याद रखें, जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारे पास किसी भी क्लोज पाथ में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो नल वेक्टर होगा. इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या इसको मुझे आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या अगर एरो का निशान नहीं है तो आप इसको जो है बोल्ड कर. The zero will be bold, it shows null vector. ये जो है आपको क्या बता रहा है, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है. लेकिन अगर हम बात कर लें डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, डेट विल बी 0. इसका मतलब है कि कोई भी क्लोज पाथ हो, बॉडी जाती है 10 मीटर ईस्ट और वापस जो है वो आती है 10 मीटर ईस्ट का जो ऑपोजिट है वो है वेस्ट. सो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, नल वेक्टर. और यही हमारे पास जो है 2023 का एमसीक्यू भी था कि अगर कोई बॉडी 10 मीटर ईस्ट की तरफ जाती है वो किस डायरेक्शन में चली जाए और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करे ताकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास नल वेक्टर आ जाए या डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो 0 आ जाए. तो जिस पॉइंट से बॉडी ने स्टार्ट किया अगर उसी पॉइंट पर वापस आती है, so the resultant displacement will be how much, null vector. The magnitude of the displacement will be equal to 0. Remember students, अगर हम डिस्टेंस की बात कर लें, so जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस वो हमारे पास डिस्टेंस is not equal to 0. डिस्टेंस ट्रेवल कभी भी 0 नहीं हो सकता, चाहे वो जो भी पाथ हो. डिस्टेंस ट्रेवल कभी भी 0 नहीं हो सकता. सही था, डिस्टेंस ट्रेवल की बात कर रहा हूं. अब मैं यहां पे खड़ा हूं, after 1 second, how much distance I'm at rest, it means to the distance travel. If a body is at rest, the distance travel will be 0. So इसका मतलब है अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो the distance travel वो तो जाहिर बात है 0 होगा. Distance is not equal to 0. हम कौन सी कंडीशन की बात कर रहे हैं, क्लोज कंडीशन की बात कर रहे हैं. अंडर द कंडीशन ऑफ क्लोज पाथ
the distance is not equal to 0. जो distance होगा चाहे जो भी close path होगा वो non zero होगा। इसका मतलब है अगर देखा जाए let's suppose MCQ आता है, किस किस्म के MCQ आता है कि a body moves in a circle, a body move in a circle complete one rotation. Then option A आपसे मैं पूछ रहा हूं what is the distance, option B मैं आपसे पूछ रहा हूं what is the displacement, option C what is the ratio of the distance to displacement, option D what is the ratio of displacement to distance। ये तमाम चीजें मैं आपसे जो है पूछ रहा हूँ ऑप्शंस में। तो याद रखिए अगर कोई बॉडी, कल भी हमने डिस्कस किया था, अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है और कंप्लीट वन रोटेशन, तो याद रखिए द डिस्टेंस विल बी हाउ मच, योर आंसर शुड बी 2 पाई आर, द डिस्टेंस विल बी 2 पाई आर। डिस्टेंस किस चीज के बराबर होगा, वो हमारे पास 2 पाई आर के बराबर होगा। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो आप कहेंगे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमारे पास होगा नल वेक्टर के बराबर होगा। सही ना, ये आपका ए का आंसर है, ये आपके बी का आंसर है। अगर मैं आपसे कहूं जब बॉडी मूव इन अ सर्कल कंप्लीट वन रोटेशन द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, तो आप कहेंगे क्या कर देगा, सी द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस इज 2 पाई आर एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0, एनी नंबर डिवाइडेड बाय, अगर मैग्नीट्यूड की बात कर ले, लेट्स सपोज दिस इज मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड, सही ना, तो आप कहेंगे दिस इज 0, नॉट अ नल वेक्टर, द रिजल्ट विल बी इनफाइनाइट। लेकिन अगर हम डी की बात कर लें, ऑप्शन डी जो कि है द डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड टू द डिस्टेंस, सो 0 डिवाइडेड बाय 2 पाई आर, योर आंसर शुड बी 0, योर आंसर शुड बी 0। ये हमारे पास जो है आंसर होगा, दिस विल बी योर आंसर। अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हमसे कहा जाए, फॉर एग्जांपल अंडर द कंडीशन ऑफ zigzag पाथ या irregular पाथ, zigzag पाथ, अगर हम zigzag पाथ ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये पाथ है, सही है, अगर देखा जाए ये जो मैंने zigzag लाइन लगा लिया, ये हमारे पास डिस्टेंस है और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। तो याद रखिए zigzag पाथ में जो डिस्टेंस होगा that will always be greater than the displacement. The ratio of the distance to displacement will always be greater than 1. Yeah, the ratio of the displacement to distance will always be less than 1. अगर आपसे कहा जाए कि the distance is greater than the displacement, what will be the path? जो path होगा वो हमारे पास zigzag path होगा। The ratio of the distance to displacement is greater than 1, तो path कौन सा path होगा, zigzag path होगा। The ratio of displacement to distance is less than 1, no path कौन सा path होगा, वो हमारे पास zigzag path होगा, zigzag path होगा। इसका मतलब है मैं लिख सकता हूँ कि the numerical ratio, the numerical, अगर MCQ आता है, the numerical ratio of distance to displacement, the numerical ratio of distance to displacement, option A, the distance to displacement magnitude की बात कर रहे हैं, that is 1, option B, the numerical ratio of the distance to displacement is greater than 1, the numerical ratio of the distance to displacement is greater or equal to 1, the numerical ratio of the distance to displacement is less than 1. So which option is the correct option? This option is the option number C is the correct option. The ratio of the distance to displacement magnitude is always greater or equal to 1.
Under what condition is equal to 1? If a body move in a straight line. Under what condition the distance to displacement ratio is greater than 1? If a body move in a zigzag path. See ना? If a body move in a zigzag path. तो such type of MCQ पेपर में आ सकते हैं और उनके बारे में हमसे पूछा जा सकता है. Closed path में displacement का magnitude 0, displacement null vector, distance is non-zero. Straight path के condition में distance is equal to displacement या displacement magnitude is equal to distance. Zigzag या irregular path के केस में जो हमारे पास distance होगा वो हमेशा greater होगा displacement से related, displacement के मुकाबले में. Now अगर हम ये तो हमने एक complete circle की बात की. अगर मैं कहूँ कि body move in a circle, then what will be the distance? If a body move in a circle, then in semicircle, what will be the distance? What will be the displacement? What will be the ratio of the distance to displacement? मुख्तलिफ किस्म के questions similarly हमसे जो है पूछे जा सकते हैं, तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए. How? Let's suppose अगर मैं कहूँ कि if in semi circle, अगर semi circle की बात कर रहे हैं, semi circle means circle का half. अगर ये हमारे पास circle है, complete circle, इसके में 4 quadrants बना रहा हूँ. This is A, B, C, D. Semicircle की बात हो रही है from A to C. So the distance from A to C is how much? अगर देखा जाए half of the circumference of the circle या circumference बराबर होगा है 2 pi r. So फिर मैं कह सकता हूँ कि circumference हमारे पास जो है बराबर होता है 2 pi r divided by 2. The answer is pi r. या मैं कह सकता हूँ कि the distance covered from A to B is equal to, अब अगर देखा जाए हमारे पास जो r होता है वो हाफ ऑफ डायमीटर होता है. सो मैं लिख सकता हूँ पाई d डिवाइडेड बाय 2. लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मुझसे डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछा जाए, सो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A to B is equal to, this is the shortest straight path is called displacement. So the displacement will be equal to 2r, which is also equal to diameter, of a circle. सही है? अगर फॉर एग्जांपल हमसे कहा जाए कि in semicircle the ratio of the distance to displacement from A to C, so your answer should be that the distance is pi r and the displacement is how much, which is 2r. Now r cancel, the answer is pi divided by 2, which is also written as 3.14 divided by 2, which is also written as pi is 22 divided by 7, and this is 2, which is also written as 11 by 7, which is also written as 11 ratio 7. Why? 2 to have वो cancel हो जाएगा, 2 1s are 2 11s are. So the ratio of the distance to displacement is 11 ratio 7 in semicircle. Now अगर मैं कहूँ कि the ratio of displacement in semicircle, अगर मैं semicircle ले लूँ, the ratio of the displacement to distance from A to C, this is A to C. आपके समझाने के लिए लिख रहा हूँ. तो displacement क्या है वो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, जो कि बराबर है 2r. और डिस्टेंस क्या है सेमी सर्कल में, वो हमारे पास है जो है सेमी सर्कल में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है, दिस इज A to C, दिस इज A to C, वो है पाई r. तो ये हो जाएगा पाई r कैंसिल, द आंसर इज 2 डिवाइडेड बाय पाई, या दिस इज आल्सो रिटन एज 2 डिवाइडेड बाय 3.14, या दिस इज आल्सो रिटन एज 2 बाय पाई, नो 2 डिवाइडेड बाय 22 by 7, या 2 1s are 2 11s are. Now this is also written as 7 ratio 11. In semicircle the ratio of the distance to displacement is 11 ratio 7, yeah, the ratio of displacement to distance is 7 ratio 11.
Now, in quarter of a circle, if we discuss one quarter, so in one quarter, what will be the distance, what will be the displacement, what will be the ratio of the distance to displacement, what will be the ratio of the displacement, distance to displacement. Such type of MCQ पेपर में आ सकते हैं, सर्कल से रिलेटेड वगैरह जो है क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि आपके बुक में है, आपके बुक में इससे रिलेटेड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है। सो अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, लॉन्ग क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, तो इसका मतलब है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, टेस्ट के लिहाज से। अगर हम क्वार्टर ऑफ अ सर्कल की बात करें, क्वार्टर ऑफ अ सर्कल, सर्कल का चौथा हिस्सा, let's suppose this is one complete circle. Now this is say A and this is B. From A to B, this is say R, radius of circle, radius of the circle. The distance traveled from A to B, already we know in quarter of a circle the distance from A to B is circumference का चौथा हिस्सा। Circumference बराबर है 2 pi r, 2 pi r by 4. The answer is pi r divided by 2. Pi r divided by 2. Now, the displacement from A to B, यो दिन हमने डिस्कस किया था। So displacement is the shortest straight path between two points. Using Pythagoras theorem, अगर देखा जाए this is a right angle triangle. So in one quarter, the displacement is r square plus r square, which is equal to under root 2r, which is equal to under root 2r. If r is given, just putting value and solve. अब अगर for example in quarter of a circle the distance is pi r by 2 and the displacement is under root 2r, what will be the ratio of the distance to displacement? The ratio of the distance A to B, the ratio of the distance to displacement in a quarter of a circle, so distance is given pi r divided by 2. अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं इधर डिवाइड और फिर ये, तो अगर देखा जाए यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दिस इज डिवाइड, दिस इज अंडर रूट 2 एंड r, या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ अंडर रूट 2r डिवाइडेड बाय 1. मैथमेटिक्स ऑलरेडी हम जानते हैं कि अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं ये उलट हो जाएगा, सो ये हो जाएगा pi r डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 2r. r के साथ कैंसिल, the answer will be pi divided by 2 under the root 2. This will be the ratio of the distance to displacement in quarter of a circle. या pi की जगह आप लोग जो है वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, which is 3.14 या 22 divided by 7, ये वैल्यू भी आप लोग पुट कर सकते हैं। Similarly, अगर हमसे कहा जाए कि in quarter of a circle the ratio of displacement to distance, so फिर आप कहेंगे इसी को उलट कर लें, so the answer will be 2 under root 2 divided by pi. So इधर 2 under root 2 divided by pi. Now अगर हम बात कर लें कि the distance covered by a body in 3 quarters, what will be the displacement, what will be the ratio? अगर 3 quarters की बात कर लें, 3 quarters या 3/4 of a circle, अगर 3/4 of a circle की बात करें मतलब है 3 quarters. क्या मतलब है? मतलब ये है कि a body move in a circle, then if we divide the whole circle into 4 quarter, this is first quarter A to B, second quarter, third quarter. What is the distance from A to D? So अगर देखा जाए the distance covered from A to D is equal to the distance covered from A to D. तो first quarter में जो distance cover होता है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, which is pi r by 2. तो अगर देखा जाए कितने quarters है, 3 quarters है, तो ये हो जाएगा 3 pi r divided by 2. अगर हम displacement की बात कर लें, displacement from A to this is D, A to D is equal to, याद रखिए displacement क्या है A to D, no, the shortest straight path between 2 points. If this is R, this is R. Now this is a right angle triangle, so the displacement will be
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. सॉल्व, यू विल गेट अंडर रूट 2r. जिसका मतलब है कि जो फर्स्ट क्वार्टर है उसमें भी अंडर रूट 2r का डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, और जो हमारे पास तीन क्वार्टर्स है उसमें भी डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है अंडर रूट 2r. अगर आपसे कहा जाए कि the displacement travel in the first quadrant is, let's suppose, 2 meter, then the displacement cover travel in 3/4 of rotation, in 3 quarters is remain same, which is 2 meter. The ratio will be 1:1. It means that the displacement travel in the first quadrant must be equal to the displacement travel in 3 quarters. Now, what will be the ratio of the distance to displacement? Now, the ratio of the distance to displacement in A to D, which is 3/4 of rotation. This is A to D. So the distance is how much? 3 pi r divided by 2 divided by under root 2r. This is also written as under root 2r by 1. If we convert the divide into multiplication, इसको उलट कर लेंगे, so ये हो जाएगा 3 pi r divided by 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, और ये हमारे पास ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2r, ये और ये कैंसिल. सो द आंसर विल बी 3 पाई डिवाइडेड बाय 2 अंडर द रूट 2. नाउ अगर हमसे कहा जाए तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A to D टू डिस्टेंस फ्रॉम A to D, तो इसी को उलट कर लें तो आप कहेंगे 2 अंडर द रूट 2 डिवाइडेड बाय 3 पाई. सो इधर तो सच टाइप ऑफ एमसीक्यू जो है वो पेपर में आ सकते हैं. इनके बारे में आप लोग प्रैक्टिस करें. प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट. इसमें कुछ भी नहीं है. टॉपिक के बारे में आपको पता है. याद रखें, जब भी आप एमडीकेट टेस्ट के लिए बैठते हैं तो जो भी आप एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको टॉपिक के बारे में जो है वो मस्ट पता होना चाहिए. उसके बाद अगर आपको टॉपिक के बारे में जो है पता है तो इससे रिलेटेड जिस किस्म का एमसीक्यू भी आ जाए तो इंशाल्लाह वो उम्मीद है आप हल कर सकते हैं. तो याद रखें, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट. सिर्फ वो सिर्फ प्रैक्टिस है. सही ना. अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि जब हम पेपर के लिए बैठ जाते हैं सब कुछ भूल जाता है, तो असल में ये क्या है? प्रैक्टिस की कमी है. तो आप जितना प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे तो उतना आप परफेक्शन की तरफ जाएंगे. सही ना. तो याद रखिए, जस्ट सीख लें और प्रैक्टिस कर लें. सही ना. मुख्तलिफ संडे टेस्ट किया करें, और इसके अलावा जो है बुक्स, इसके अलावा नेट इस्तेमाल किया करें. सही ना. हर चीज आपको इजीली जो है वो नेट पे प्रोवाइड हो सकता है. अगर हम बात कर लें, लेट्स सपोज एक फिगर में दे रहा हूं और मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे बताएं कि व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट. लेट्स सपोज अगर मैं ये एक फिगर दे दूं, दिस इज अ सेमी सर्कल, दिस इज A, दिस इज B. इस सेमी सर्कल का रेडियस भी लेट्स सपोज दिया गया है which is 2 meter, and this is let's suppose 3 meter. What is from A to C? What is the distance covered from A to C? Remember, the distance covered from A to C, the distance is equal to the distance covered from A to B plus the distance covered from B to C. Now from A to B, this is a semicircle, and in semicircle the distance formula is circumference divided by 2, and circumference is 2 pi r, circumference divided by 2, plus B to C is how much? 3. Now circumference is 2 pi r, 2 pi r divided by 2, the answer is pi r plus 3. S is equal to pi is given 3.14 and r is 2 plus 3. So 3 multiply 1, 4 multiply 2, 6.28 plus 3. The distance covered is 9.28 meter, which is approximately equal to 10 meter. This is the distance traveled from A to C. What will be the displacement? Now, first of all, according to definition, displacement is the shortest straight path between 2 points, initial and final. This is initial and this is final. Now this is displacement. This is displacement. How to find displacement? Now this is actually
अ राइट एंगल ट्राइंगल। अगर देखा जाए अगर ये 2 है तो ये भी रेडियस है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास टोटल फासला हुआ 4 मीटर। और अगर देखा जाए 3 है तो इसका मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू hypotenuse is equal to under root base square plus perpendicular square। तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 प्लस 9 25 और अंडर रूट 25 बराबर होता है किस चीज की 5 मीटर। तो द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इज हाउ मच 5 मीटर। तो अगर आपको डिफिनीशंस वगैरह आपके जहन में है तो आप डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू होगा, डिस्टेंस से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू होगा, आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पिछली मरतबा भी जो है एमसीक्यू आया था, याद रखिए डिस्प्लेसमेंट आपका जो Mdcat का कोर्स है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट कोर्स है, तो इससे रिलेटेड जो है हर टॉपिक इंतहाई इंपॉर्टेंट है, तो हर टॉपिक को टच करना लाजमी है, सही ना। तो पिछली मरतबा भी जो है डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड एमसीक्यू आया था और इंतहाई आसान एमसीक्यू था। तो याद रखें अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है जो मैंने पढ़ाया है, सही, उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू वगैरह हमने डिस्कस किए हैं, अगर आपको ये क्लियर है तो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जो भी इंशाल्लाह एमसीक्यू वगैरह आएगा, उम्मीद है आप उसको जो है इंशाल्लाह इजीली सॉल्व कर सकते होंगे। सो ये हमारे पास जो है डिस्कशन रहा रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा जो पहला टॉपिक था डिस्प्लेसमेंट वो हमारा जो है आज खत्म हुआ, सही ना। तो इंशाल्लाह कल हम जो है अगर जिंदगी रही सही तो कल हम जो है स्टार्ट करेंगे स्पीड। हमारा जो टॉपिक है वो है वेलोसिटी, लेकिन सबसे पहले हम जो है स्पीड को डिस्कस करेंगे। स्पीड किसको कहते हैं, स्पीड के टाइप्स क्या हैं, उसके यूनिट्स क्या हैं, सही है, उसको तफसील कितने फार्मूले हैं उसको तफसील से डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है बच्चे फिर हम इंशाल्लाह आएंगे वेलोसिटी। अगर हमें स्पीड की समझ आ जाए तो फिर वेलोसिटी आसान है, सही ना, इतना मुश्किल क्यों। जिस तरह हमने डिस्टेंस किया उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट, एक सीक्वेंस से आ रहे हैं, पहले हमने डिस्टेंस फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट फिर उसके उनको आपस में रिलेट किया, सही ना। उससे डिफरेंट एमसीक्यूज हमने जो है यहाँ पर सीख लिए। इसी तरह हम स्पीड फिर उसके बाद हम जो है वेलोसिटी, और अगर देखा जाए किस किस्म के एमसीक्यू आ सकते हैं फिर उसको हम रिलेट करेंगे। और इसी तरह एक्सेलरेशन और हम अपना जो है ये जो सबके जारिया है ये इंशाल्लाह हम इस तरह कंटिन्यू रखेंगे। दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज़।